All right. So, good afternoon, everyone. How are you? Yes, good afternoon, good evening, good evening, good evening. So, we are going to wait for another 4 5 minutes, okay? And I am just waiting for everyone to join. We have about 50 students right now, and I am pushing for 100 students. Yes, so let's make this happen. Okay, we have 76 students, 80. Okay, so we are 85 right now, and I'm gonna start the session as soon as we touch 100. Okay, 88, 90. Okay, so you all have a question from where should we get the kit? So it's pretty simple. You have to do is just visit the website, that is creativityleague.com. Okay, and on the top right corner you can see shop and click on cart. As soon as you click on cart, there would be stempreneur kit, so you have to click there, right? uh, and there is stempreneur kit, there is astropreneur kit, and for you students there is Mecanzo Roboquest kit. So you will just simply click on it and you will click on the buy now option. uh, I am pasting the link right here. Okay, so you can click on this link and from here you can buy the kit. Okay, so now we are over 100 students and I am going to start the session. So tell me quickly, are you all excited for the session? Yes or no? Yes or no? I want a response from everyone. And this is going to be an amazing session. I know you have doubts. Ye controller kya hai? What is this? What is that? What are these things? But trust me, once you are done with this session, you will be so much clear about the things. Okay, so the one thing that I expect from you is I put in all my energy to educate you, to guide you, okay, and tell you everything that I know, and in return I only want one thing, that is energy from you. Yes, I want you to like this video. I want you to share this video with your friends, and I want you to constantly comment, and let me know how the session is going using your comments. I am already seeing a lot more members right now, and this is really amazing. Do you promise? Yes. Do you promise me? Okay. Uh, Renu Arushi Stanza KD Ethics says, yes, sir. Okay, amazing. So, without any further ado, let's begin this session.
And okay, so is my screen visible to all of you? Yes? All right, amazing. So first of all, I am going to start with this कि आपका जो रोबोट है वो कैसे दिखने वाला है. Obviously because इस लीग का नाम है क्रिएटिविटी लीग, एंड आप इसको कैसे भी डिजाइन कर सकते हो. इट्स टोटली अप टू यू. इट इज योर क्रिएटिविटी, योर इमेजिनेशन, एंड द वे हाउ यू डिसाइड to make this robot. Okay, but this in these four pictures you can see that this is the a standard robot जो कि कैसा होना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए. So this is a standard robot, and obviously you have all the choices, permutations and combinations to make your robot according to yourself. If you think this is better, if you think that is better. Okay, so during the next 5 6 days, including this, we are going to teach you about the various topics, that is electronics कैसे होता है, right? We are going to teach you कि मैकेनिकल पार्ट्स पे आप कैसे कमांड ले सकते हो, एंड वी आर गोइंग टू टीच यू कि कंट्रोलर कैसे काम करता है. वी आर गोइंग टू टीच यू व्हाट इज ब्लूटूथ मॉड्यूल, व्हाट इज आर्डुइनो ऊनो R3, व्हाट इज योर रोबोक्वेस्ट कंट्रोलर, उसके अंदर एग्जैक्टली क्या चीजें हैं, मोटर ड्राइवर क्या होता है. एंड देन शहनवाज सर इज गोइंग टू टीच यू अबाउट व्हाट your coding is, how the logic works. Okay, and then we have Webhav sir on the panel, who is also an amazing mentor, right? So we have a whole panel of mentors right here. So I'm sure you must be excited. So quickly, let's jump to the basics. And first of all, let me tell you that this is a standard robot. And if you look, there are four pictures, and these pictures demonstrate that the robot is in back view, top view, front view, and side view. तो आप इसे side से, ऊपर से, नीचे से, पीछे से एक बार अच्छे से देख सकते हैं कि actually what is happening. Okay, so this is something um, uh, what your robot should look like. Okay, so now the thing is that moving forward, so this is the controller unit. Okay, so this is your controller unit. Now controller unit consists of a few things. First of all, your Bluetooth HC05 module. Okay, and now let me tell you कि ये है क्या, है ना, ये HC05 क्या है. So I am sure कि you all have been born into the era of Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee, LAN cable networks and all. Okay, and you guys are really familiar कि ये सारी technology क्या होती है. So which is actually a good thing. Now we are just going to use this technology for our better self. So HC05 is a Bluetooth module. Bluetooth module मतलब simple, जैसे आप अपना earphones and speakers वगैरह connect करते हो phone से Bluetooth के through. So in the same fashion, we are going to connect a Bluetooth module with our phone. Okay, and in the later workshops, we are going to teach how. So this is the first module, that is the Bluetooth HC05, जिससे आप अपने phone से connect करोगे. Now secondly, we have the this DC jack, जिसके अंदर we have 6 wires, two wires के 3 pairs. I'm sure you understood that. So there are 3 pairs, and her pair में there are 2 wires, as you can see. One is black and the other one is red. So now what happens is that if you look closely, if you look closely, so आपको दिखेगा M1P M2. So जो M1 से जो black and red wires निकल रहे हैं, they will be connected to the motors. Okay, which motor number 1, उसे आगे रोटेट करने के लिए या बैकवर्ड रोटेट करने के लिए. Then we have in the middle hole we have our power input, जहाँ से you will be powering your controller, right? And in the third box we have your motor number 2, which you will also be connecting through the wires. Okay, so first one is motor 1, second is power, and third is motor 2. So we have 3 holes. 2 are for motors and 1 is for powering the Roboquest
controller. I am sure you understood this. Now there is a 6 pin connector. So अब देखो क्या होता है कि 6 pin connector, अब last year we had a issue कि some of our young friends weren't able to like connect with the ब्लूटूथ मॉड्यूल. कभी उल्टा लगा देते थे, कभी कनेक्शन में इशू आता था, कभी ज्यादा पावर देती तो ब्लूटूथ मॉड्यूल खराब हो जाता था. सो वी हैड इश्यूज लाइक दिस. सो दिस ईयर वी थॉट व्हाई नॉट हेल्प आवर talented students and just simply create a cable जिसके अंदर already 6 holes होंगे, and all you have to do is आप ब्लूटूथ मॉड्यूल लोगे and then you just have to plug it in. एंड अभी तो आपको वो भी नहीं करना, बिकॉज व्हेन यू बाय द रोबोक्वेस्ट कंट्रोलर, this Bluetooth module already comes attached to its side, so you don't have to do anything extra or anything else. Is that clear? Yes or no? I hope so. Okay, right. Then you have your USB, and USB is used to code your Arduino Uno. That is used to make the logic and upload the code in Arduino Uno. Now, what happens is, first of all, आपको कोड अपलोड करने के लिए यू नीड Arduino IDE. अब ये Arduino IDE कहाँ से आ गई? What is this, sir? ऐसे there are new things coming. Okay, so Arduino IDE is nothing but a very basic simple software जिससे कि आप जो कोड लिखते हो, you can upload that code into your Roboquest controller. वैसे you need not worry. I am telling you, you need not worry, because आप जब Roboquest का कंट्रोलर बाय करोगे, so it will already come with a with the code uploaded. ये नहीं होगा कि it is empty कि आपको कोड अपलोड करना पड़ रहा है या आपको पूछना पड़ रहा है. Nothing like that. The code has already been the standard code. Okay, the standard code has already been uploaded. And now what happens is that uh, in this you can also manipulate and make your own code. Okay. No, Neeraj, I just have to clear your doubt. If you are buying the RoboQuest kit, right? If you are buying the RoboQuest kit, तो उसके अंदर RoboQuest controller automatically आएगा. You need not buy the RoboQuest controller separately. Am I clear? ठीक है. So if you are not wishing to buy the kit because you know कि सर मेरे पास तो पहले से kit है, या I'm doing this, या मैं कहीं और से बना रहा हूँ, जो भी XYZ reason है, but the RoboQuest controller is mandatory. Okay, so उसकी वजह से क्या होगा कि you either you have two options. या तो आप RoboQuest controller अलग से खरीद सकते हो separately without buying the kit. Okay, and if you are using some other kit or robotic parts etc., and if you are using our Mecanzo RoboQuest kit, उसके अंदर controller already built in आएगा, like package होके आएगा, so you need not buy it separately. I hope I made myself clear. And finally we have our DC jack to power on our devices. Okay, and finally we have the BLU pin out. So ये Bluetooth जो मॉड्यूल है, इसके अंदर there are several pins such as enable, state, RxD, TXD, VCC, ground, है ना. अभी आप सोच रहे हो सर ये क्या है, ये तो एक के बाद आप एक बॉम्ब छोड़े जा रहे हो हम पे, राइट? सो डोंट वरी, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. एंड वी ऑलरेडी हैव, आपने देखा होगा, इट इज ऑलरेडी कनेक्टेड विद 6 वायर्स. So वो Arduino में already connected है, and all you have to do is simply connect this Bluetooth module correctly. So I'm just gonna zoom in so that all of you can see. So starting from the left, the first pin is state, then there is RX, that is receiver, then there is TX, that is transmitter, then you have GND, that is ground, then you have VCC, that is the power supply, and the last one is enable, that allows the shift register memory. Okay, so these are the pins. You need not know much about them because Bluetooth already connect होके आ रहा है ना. So छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है. This is my advice for all the youngsters. Okay, and why am I saying so? See, there is this thing
that आपके पास रोबोक्वेस्ट कंट्रोल आता है फॉर एग्जांपल, ओके, एंड नाउ आई नो दैट वी ऑल आर वेरी क्यूरियस, है ना, हम सभी क्यूरियस रहते हैं कि सर इसके अंदर क्या होगा, कैसे बनाया है, कैसे किया, आई नो होता है। मैं व्हेन आई वाज यंग आई वाज आल्सो वेरी वेरी क्यूरियस कि सर इसके अंदर होता क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट करके, थिंग्स लाइक दैट। बट what happens is that you are too young, and if you take a screwdriver and try opening the RoboQuest controller, there are chances, है ना, सो देर आर चांसेस दैट आप उसे खराब कर दो, कोई वायर निकल जाए या कुछ प्रॉब्लम आ जाए। So to avoid issues like this, I suggest you that you should refrain from opening the controller at least until the competition is over. उसके बाद भी you can use it in various different multiple things. Okay, बहुत useful controller है. So I suggest कि आप मत करो उसे open. एंड अगर कोई इशू आता है फॉर एग्जांपल रोबोक्वेस्ट कंट्रोलर, वैसे तो नहीं आएगा बिकॉज वी हैव थॉरली चेक्ड इट ओवर एंड ओवर अगेन, एंड इट इज अ बिल्ट इन क्वालिटी प्रोडक्ट, सो डोंट वरी अबाउट दैट। बट इफ स्टिल अगर आपको कोई इशू आता है कि सर एक्स वाई जेड ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, सो व्हाट यू विल डू इज फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल रीच आउट टू योर मेंटोर इन द स्कूल, ओके, यू विल स्टेट योर प्रॉब्लम टू द मेंटोर एंड खुद से ओपन नहीं करना है। let your mentor check कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, ओके ये प्रॉब्लम है, then he can communicate with us, he can communicate at ABL education, and similarly he will be able to solve your issues, okay, but this is a strict policy that once the controller has been opened, the warranty becomes void, तो आप उसे रिटर्न नहीं करा सकते, रिप्लेस नहीं करा सकते, एंड अ लॉट ऑफ अदर इश्यूज। सो आई सजेस्ट कि आप ओपन मत करो इन एनी ऑफ द केसेस। एंड आई ऑल्सो नो दैट अगर एक आध किसी के में एक्सेप्शनली अगर किसी के में ऐसा हुआ कि कोड नहीं आ पाया, राइट, कोड अपलोड होके नहीं आया, सो आई वुड बी शेयरिंग द कोड, एंड ऑब्वियसली सिर्फ शेयर क्यों करना है, आपको ये कोड वैसे भी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, एंड वी हैव अ शेनवा सर विद अस हु विल बी एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी लाइन ऑफ दिस कोड thoroughly, so you need not worry अरे सर कोड नहीं आया, this and that, all you have to do is just copy the code and paste it, okay. Okay, so the price of this kit is marked at 3,000 rupees plus GST. Okay, so in this kit you get your RoboQuest controller plus the parts required to make the robot. Plus you get your wheels, your chassis, okay, and a lot of other things. So I will be covering that in the later slides. Okay, yeah. So that's what I said. The price of the kit is 3,000 rupees plus GST, 18% GST. So, as you all know, GST directly goes to the government of India, right? Yes, no, okay, Rekha, it is not mandatory to buy the RoboQuest kit, but the RoboQuest controller is mandatory. Like you have to have it. You have to. जो team है, for example, if you have a team of 3 students, okay, so 3 students के बीच में you should at least have one RoboQuest controller to control all of these things together, okay. So okay, moving on. The major components that you would be requiring to build this robot, and उसमें से कुछ तो already आपके built in आते हैं inside the RoboQuest controller. So first of all you need Arduino Uno R3. Now what is Arduino Uno R3? सबने computers का नाम सुना है? Computers, yes or no? Okay, so
Yes, you can also use your own parts to make the controller as well. Okay. So Aditi, if you bought the RoboQuest kit and the controller together, I suggest that you return one of these things, क्योंकि जो आपकी किट है उसके अंदर ऑलरेडी RoboQuest कंट्रोलर आएगा, एंड अगर आपने अलग से खरीद लिया तो आपके पास दो RoboQuest कंट्रोलर हो जाएंगे, विच इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अ सिंगल रोबोट. ओके, सो आई सजेस्ट कि आप एक बार बात कर लो एट द हेड ऑफिस HR. Okay, and then you can just simply return the extra controller. Okay, first wait and let your package arrive. Okay. So I was explaining कि Arduino Uno क्या होता है. So सबने computers देखे हैं. So Arduino Uno is a little computer, nothing else but a simple computer. आप ऐसे समझो कि एक बहुत बेसिक सा कंप्यूटर है जिसको छोटा कर दिया गया है, बहुत छोटा. अब ये हैवी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे कुछ डिस्प्ले करना, आपको मोबाइल फोन्स की तरह चलाते हो तो कुछ दिखा देना. It cannot do things like this, but it can definitely do things like controlling something. It can do basic task कि किसी सेंसर की रीडिंग लेनी है, कुछ वायरलेस कम्युनिकेशन करनी है. So it can do things like that. Okay, so this is Arduino Uno. Then you need the motor driver. Okay, so let me ask you a question. So for example, you buy a car. ठीक है, you buy a car, and now what happens is that आपको कार तो चलानी आती ही नहीं है, आपके ड्राइवर्स लाइसेंस ही नहीं है. व्हाई? बिकॉज यू आर अ किड, बट आपको गाड़ी में घूमना है. तो आप क्या करोगे? वुड यू हायर अ ड्राइवर? यस और नो? यस और नो? श्योर. तो आप एक ड्राइवर हायर करोगे, जो ड्राइवर आपकी हेल्प करेगा सिटी में घूमने के लिए. लाइक ही विल टेक यू प्लेसेस, आप अपना आराम से गाड़ी से उतरो, खाना पीना खाओ, यू डू एवरीथिंग, एंड देन ही कम्स बैक टू पिक यू अप, एंड दिस इज हाउ योर ड्राइवर वर्क्स. सो इसी की तरह जो मोटर्स होती हैं, दैट इज द BO मोटर्स, दैट इज द बैटरी ऑपरेटेड मोटर्स. ये खुद से कभी कभार नहीं चल पाती एक्यूरेटली, प्रिसाइजली. मतलब आगे होना, लाइक मूविंग फॉरवर्ड और मूविंग बैकवर्ड और मूविंग राइट और मूविंग लेफ्ट, कभी कभार ये चीजें खुद से नहीं कर पाती. सो वी हैव हायर्ड अ ड्राइवर जो कि अगेन is built inside the RoboQuest controller. And now what this driver does is ये आपका what shall we say, ये आपकी सारी चीजों को एक साथ put together कर देता है, and it helps the motors to move forward, move backward, move individually, move simultaneously. One is forward, the other is backward, the other one is forward, and the this one is backward. तो आगे पीछे, forward, backward, left, right. The controller helps you to do all these kinds of things. Okay. Now we have the wheel, that is the wheels that are given inside the kit. Okay, and uske baad you have your HC05 Bluetooth module, which I have already shared with you. 12 वोल्ट बैटरी पैक, तो एक बैटरी पैक भी इसके साथ इंक्लूडेड आएगा. सो यूज इट केयरफुली. ओके, अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ अ सुपरवाइजर और अडल्ट. ओके. Okay, moving on. You have to use these following steps to complete and integrate your robot into what the final product looks like. So ये आपका थोड़ा सा सब्जेक्ट है कि ये करिकुलम कैसे जाने वाला है. दिस इज an overview. So for example, in steps 1, 2 and 3 you will be taking the cable, Arduino se obviously, and then you would be connecting the USB cable to your Arduino board,
and connect USB board cable to laptop PC USB port. Okay, so this is step 1, 2, and 3. Then what we do is we have your open Arduino IDE. Okay, so this is a small code, small software which is used to upload the codes in your uh, robot. Okay, so this is step number 2. Okay, and just hold on, just give me 5 minutes. Okay, I'm just gonna come back. I have to clean. थोड़ा सा cold हो रहा है, right? क्योंकि मौसम change हो रहा है obviously, so I'm catching a bit, little bit of cold. I think आपको भी मेरी आवाज से पता चल रहा होगा, so don't worry about it. Just give me five minutes, not even 5 minutes. Just give me 1 minute. That's all. Okay, so I'm back, right? So just one small. Okay, so yeah, I also say that you all should also take care of yourself because obviously the weather is changing, and अभी जब सर्द ट्रांजिशन होता है फ्रॉम दीज समर्स टू विंटर्स, सो उस टाइम पे थोड़ा सा अपना ध्यान रखना चाहिए, राइट? सो ओके, राइट. Others, let me just tell you that you cannot use any other controller. Okay, so this is kind of mandatory that you can only use the Roboquest controller, because see what happens is हम सबको लेवल पे रखना चाहते हैं. I want each and every student to be on the same level. There should be no partiality कि कोई स्टूडेंट फिफ्थ या सिक्स क्लास में एंड कोई स्टूडेंट नाइन्थ या एट्थ क्लास में है, सो उनके साथ थोड़ा सा लेवल अप एंड डाउन हो जाए, बिकॉज ऑब्वियसली द ओल्डर स्टूडेंट्स वुड गेट अ मोर एडवांटेज क्योंकि वो बड़े हैं एंड दे नो मोर अबाउट दीज थिंग्स. छोटे बच्चों का नहीं हो पाता. सो दिस ईयर yeah, obviously. See, let me just clear this one thing. I think you all have a doubt here. So there are two things that are there in the RoboQuest competition. RoboQuest kit number one.
Roboquest controller. Okay, Roboquest kit and Roboquest controller. Now what happens is कि अगर आप RoboQuest की किट खरीदते हो तो यू ऑलरेडी गेट योर RoboQuest कंट्रोलर इनसाइड इट, आपको अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है. ओके, एंड one more thing. Now what happens ki for example you have rojo RoboQuest का controller है, that is mandatory, but RoboQuest की जो kit है that is not mandatory. अगर आप कहीं और से किसी और किट का यूज करके XYZ बनाना चाहते हो सो यू आर अलाउड टू, बट देन द थिंग इज कि हम लोग जो सिखाएंगे ड्यूरिंग दिस वर्कशॉप वो हम लोग अपनी मैकेंजो की किट पे हम लोग बनाएंगे बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर बाइंग इट. So if you want to take your own leap, you are more than welcome to do so, right? And अब क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपने किट खरीदी तो किट के साथ साथ आपको पार्ट्स भी मिल गए, बॉडी भी मिल गई, रोबोट बनाने के मटेरियल्स भी मिल गए, रोबोक्वेस्ट कंट्रोलर भी मिल गया. बट नाउ यू आर आस्किंग मी कि फॉर एग्जांपल कि सर मेरे पास किट तो है, कि मतलब रोबोट की बॉडी बनाने का मेरे पास सामान है, लाइक व्हील्स, चैसी एटसेट्रा सब है सर, बट क्योंकि सर आपने बोला कि रोबोक्वेस्ट कंट्रोलर तो मैंडेटरी है तो अब मैं क्या करूं. सो इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू कि आप सिर्फ और सिर्फ रोबोक्वेस्ट का कंट्रोलर बाय करोगे, दैट्स इट. यू नीड नॉट बाय द होल किट, आप सिर्फ और सिर्फ रोबोक्वेस्ट का कंट्रोलर बाय करके काम कर सकते हो. ओके, सो आई होप आई हैव मेड दिस वेरी क्लियर. Okay, so moving on to the further steps, we have you have to connect the Bluetooth, which is a part of circuit design and which will be taught to you in the upcoming sessions कि Bluetooth कैसे connect करते हैं, which is not a very big deal. आप Bluetooth already you have been studying about Bluetooths and you have been using Bluetooth since you were very young. Yes, I know this generation. Most of you are familiar with the Bluetooth concept. So we are just going to guide you कि actually कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, so things like that. Okay, and then you have the motor and power connection. So motor का connection कैसे होगा, motor M1 M2 power connection किधर जाएगा, things like that. So किधर होना है, कैसे होना है, so okay. And then you have your power and cross verify schematic connections. So all you have to do is कि last में आपको सारे अपने जो कनेक्शन है वो एक बार चेक करने, कहीं कुछ गलत तो नहीं लगा दिया. ओके, सो वर्कशॉप में आपको ये भी सिखाया जाएगा. इट इज अ वेरी हैंड्स ऑन वर्कशॉप एंड लाइक एज आई हैव सेड बिफोर कि अच्छी बात होगी अगर आप ने ऑलरेडी किट ऑर्डर कर ली हो, एंड इफ नॉट यू कैन, सो जब तक ये मेंटरिंग वर्कशॉप चलेगी एटलीस्ट आपके पास किट आ जाएगी एंड यू कैन डू समथिंग प्रैक्टिकल. ओके, and finally you have step 12 where you can watch the demo video कि ये कैसे काम करता है, how does this work and everything else. Okay, so this is the microcontroller that is called Arduino Uno. How many of you have seen this controller before? Okay, okay, okay. So some of you are familiar. So I'm just gonna tell for our younger friends. So those who are experiencing this for the first or the second time. So what is Arduino? Arduino basically एक छोटा सा कंप्यूटर है जो कुछ बेसिक कैलकुलेशंस कर सकता है. Now what happens is इसके अंदर you have an Atmega 328P जो कि एक माइक्रो कंट्रोलर है. छोटी छोटी चीजों को कंट्रोल कर सकता है, अपना काम हो जाता है डेली बेसिस पे. ओके, सो नाउ व्हाट हैपेंस इज इट हैज डिजिटल पिन्स. अब डिजिटल पिन्स क्या होती है? अ डिजिटल पिन इज अ पिन जो कि सिर्फ दो चीजों पे काम करती है, दैट इज हाई एंड लो. डिजिटल द वर्ल्ड दैट वी लिव इन, मतलब जो डिजिटल का वर्ल्ड होता है उसके अंदर देयर आर ओनली टू थिंग्स. फर्स्ट इज हाई एंड लो. अब हम उसे सिनोनिम्स दे देते हैं, वी कैन कॉल इट बाय डिफरेंट नेम्स.
power off, power on, 0 1, high low. Okay, so हम synonyms दे देते हैं, but these things almost mean the same. And this ये जो pin होती है digital pins, uh, let me just show you here. Can you see them? Okay, okay. So I hope you all are able to see these pins. तो अब ये शुरू कहाँ से होती है? So these pins start from pin number 0 and go all the way up to pin number 13. तो अगर 0 से 13 तक पिन है तो how many total pins are there? Okay, 14, correct. So that's what I was looking for. So you have 14 pins Arduino Uno के अंदर, okay, and then you have a few other components जैसे कि क्या, let me just brief you about that. So you have one USB port. अब ये USB port क्या करता है कि आप simple wire लोगे and you can connect your code with this USB cable. आप upload कर सकते हो, download कर सकते हो, everything like that. So USB cable connect हो जाता है. Supports 5 to 9 volt DC power supply. So 5 से 9 volts के बीच में DC supply ये use करता है. But you must be asking सर आपने तो 12 volts बताया अभी अभी. But 12 volts is the battery जो आप मैक्सिमम पावर यूज कर सकते हो. वैसे तो जो स्टैंडर्ड है दैट इज 5 to 9 वोल्ट्स में काम हो जाना चाहिए. बट व्हाई एम आई रिकमेंडिंग 12 वोल्ट्स? बिकॉज आप सिर्फ आर्डुइनो को पावर नहीं कर रहे हो, आप इसके साथ साथ किसको पावर कर रहे हो? यू आर ऑल्सो पावरिंग अ ब्लूटूथ मॉड्यूल, राइट? एंड यू आर ऑल्सो पावरिंग योर मोटर ड्राइवर. तो दीज थिंग्स रिक्वायर अ सर्टेन वोल्टेज. थोड़ा बहुत चलता है, मेहनत होती है इसमें, राइट? सो दैट इज व्हाई वी आर अटैचिंग 12 वोल्ट्स. नाउ वन डीसी जैक फॉर एक्सटर्नल पावर सप्लाई. तो मान लो फॉर एग्जांपल कि आपकी जो VIN पिन है वो खराब हो गई कभी भी, तो आप वोल्टेज कहाँ से दोगे, आप पावर कहाँ से दोगे? वो तो ऑफ हो जाएगी. यूएसबी केबल भी आपको नहीं मिल रही, आप सोचो पावर कहाँ से दोगे? सो इन दैट केस ऑल यू हैव टू डू इज आप सिंपली एक अडेप्टर लोगे 5 वोल्ट्स का एंड आप उसे कनेक्ट कर दोगे आर्डुइनो उनो के साथ. कैसे? कैन यू सी दिस सिलिंड्रिकल शेप्ड ऑब्जेक्ट? यस. सो आप बस इसमें अपना जो अडेप्टर है 5 वोल्ट्स का वो आप इसे कनेक्ट कर दोगे एंड यू आर गुड टू गो. Now you have your USB cable, okay, USB cable, and you have the DC jack. तो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो. एंड देन दीज आर द 3 स्टेप्स कि आपको एक्चुअली कंट्रोल कैसे करना है. सो आई एम श्योर कि आप सभी को इस केबल के बारे में पता होगा अगर आपने कभी आर्डुइनो यूज किया है. सो दिस इज द वेरी बेसिक फर्स्ट केबल जिससे कि आप कुछ कंट्रोल कर सकते हो, कुछ कोड अपलोड कर सकते हो, थिंग्स लाइक दैट. तो आपने एक एंड तो किस में कनेक्ट कर दिया? आर्डुइनो उनो में. एंड सेकेंड एंड आपने किस में कनेक्ट किया? I'm waiting for the responses. ओके, ठीक है, राइट. सो दूसरा हमने कंट्रोल जो वो है वो लैपटॉप से कनेक्ट कर दिया. सो अभी कोड अपलोड करने के लिए देखो, वैसे तो इसके अंदर ऑलरेडी कोड आता है. बिफोर सेंडिंग द रोबोक्वेस्ट कंट्रोलर टू यू वी अपलोड द कोड डायरेक्टली बाय आवरसेल्व्स.
एंड इवन अगर गलती से ऐसा होता है कि यू डोंट हैव द कोड फॉर दैट, उस केस में यू कैन जस्ट कॉपी पेस्ट एंड आर कोड दैट इज गिवन एंड आप उसे सीधा अपलोड कर दो, इट्स नॉट अ बिग इशू. And okay, yeah. So okay, just give me one more minute. Let me like go to the washroom real quick. Okay, so this whole thing is really troubling me. So I'll be back in 30 seconds. This sinus thing is kind of uh, building up. So that is why I'm saying that you should also take good care of yourself. Yeah. Sorry. Okay. Yeah. I am back. So just wanted to say thank you for showing so much patience. This small thing that I have a little bit of cough build up, so it's causing a bit of an issue while I'm speaking continuously. So बस ये थोड़ा सा issue आ रहा है मेरे साथ, but I'm sure ये I will get better soon. I just have to take medicines, right? And that is why also I'm saying that you should also take care of yourselves. अभी आप लोग भी ध्यान रखो, टेम्परेचर वगैरह सब बदल रहा है, so मेरा गला भी थोड़ा पकड़ रहा है. Okay, so thank you Ritu, that is so sweet. Okay, thank you. So yes, thank you for waiting patiently and let us begin this session, continue this session, right? So Arduino IDE ही क्या है? अब जैसे आप कोड लिखते हो, ओके, सो थैंक यू सरिता. ओके, सो फॉर एग्जांपल इफ यू आर राइटिंग अ कोड, तो आप कोड लिखोगे तो आप अपलोड कैसे करोगे? आप नोटपैड में तो कोड नहीं लिख सकते जो लैपटॉप में होता है, सो यू हैव टू अपलोड द कोड समवेयर, राइट?
सो आप कोड अपलोड करोगे, सो यू विल बी अपलोडिंग द कोड इन Arduino IDE. बहुत सिंपल है. लेट मी जस्ट डू वन थिंग कि जिसके पास विंडोज है, मैं फटाफट लिंक शेयर कर देता हूँ. सो ये रहा. I have pasted this code, and let me just comment it out. So यहाँ से आप buy कर सकते, sorry not buy, आप this is absolutely free. You can download Arduino IDE for Windows from here. Okay, so don't worry about that. So आप download कर सकते हो easily, and code भी मैं share कर दूंगा. Don't worry बच्चा. You have all your programming classes left. अभी तो you have 5 more days, है ना. तो आपको सर सब सिखाएंगे एंड कोड भी शेयर करेंगे. एंड एक्चुअली जो पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, दिस पीडीएफ इज ऑल्सो अवेलेबल ऑनलाइन. जस्ट गो टू creativityleague.com एंड देयर यू कैन सी कि ये पीडीएफ है, अवेलेबल है. एंड आप इसके रूल्स रेगुलेशन सारी चीजें दोबारा पढ़ सकते हो. ओके, राइट. आप यहाँ से कॉपी कर लो. ओके, दिस लिंक, and from there we can do it. Okay, so let me just move forward. So ये आपका कोड है. एंड जस्ट लेट मी टेल यू कि आपकी जब कोडिंग क्लासेस होंगी, व्हेन शहनवाज सर और वैभव सर वुड बी टेकिंग योर क्लास, सो दे विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द कोड कि ये सॉफ्टवेयर सीरियल क्या होता है, इनेबल क्या होता है, IN1 IN2 IN3 IN4 क्या होता है, बैकलेट क्या होता है, एवरीथिंग एवरीथिंग. ओके, एंड नाउ द थिंग इज कि देखो, जब तक आपको कोडिंग नहीं आती, यू हैव नॉट लर्न, तो आप सिंपल यू हैव टू ऑप्शंस. ओके, सो कंपटीशन जीतने के लिए कुछ हटके करना पड़ेगा. सो नाउ व्हाट इज योर ऑप्शंस. सो द फर्स्ट थिंग इज कि आपको कोडिंग कराई, शहनवाज सर आपसे कोड शेयर कर देंगे ऑन द यूट्यूब लाइव और जूम मीटिंग वट एवर. ऐसे ही वैभव सर भी कोड शेयर कर देंगे. नाउ यू हैव टू ऑप्शंस कि आप सिंपली कोड को कॉपी पेस्ट कर दो एंड उसे अपलोड कर दो, विच इज प्रिटी सिंपल, है ना. एंड आपको वैसे तो करने की जरूरत भी नहीं है. वाई? बिकॉज ऑलरेडी कोडेड आता है. यस सुप्रिया, यस, द कोडिंग इज इन द कंट्रोलर, ऑलरेडी कोडेड आता है. ठीक है. सो एंड द सेकेंड ऑप्शन इज, नाउ दैट यू वर्क हार्ड, यू लर्न कोडिंग एंड यू मेक समथिंग इनोवेटिव. कुछ ऐसा इनोवेटिव कोड बनाओ दैट सूट्स योर रोबोट. इसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके, एंड देन मेक योर ओन कोड, टेक हेल्प फ्रॉम द मेंटोर और वट एवर, एंड देन यू कैन ऑल्सो अपलोड योर ओन कोड. तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हमारा कोड है और कोई अपलोड नहीं कर सकता. सो इट्स नथिंग लाइक दैट. यू कैन ऑलवेज यूज एनी अदर कोड दैट यू वांट. I hope I made myself clear, right? So just moving on. Now there are a few things that you should keep in mind while you are uploading the code. तो आपको क्या करना है कि you have to click on tools, then click on board and then select the board जिसमें आप कोड अपलोड करना चाहते हो. Now you have to learn that वर्ल्ड में बहुत सारे माइक्रो कंट्रोलर्स है, लाइक you can't even count them. 2560 मेगा, ऊनो, डेव, व्रूम, ESP32, रास्पबेरी और पता नहीं कितने सारे हैं. ओके, यू कांट इवन फैथम, इमेजिन भी नहीं कर सकते आप. तो उसके लिए क्या होता है कि यू हैव टू, बेटा हाँ ना, आपको कोड मिल जाएगा वेरी सून, जब आपकी कोडिंग की क्लास होगी शाम को, है ना, इन अ फ्यू डेज, इसी वीक मिल जाएगा.
सो आपको कंट्रोलर स्पेसिफाई करना है कि आप किस कंट्रोलर में कोड अपलोड करना चाह रहे हो, दैट इज आप यू कैन सी दैट इसके अंदर ही आर्डुइनो गैमा, रोबोट मोटर, रोबोट कंट्रोल प्रो, प्रो मिनी, बीटी फ्रो, ईथरनेट मिनी, एक्सप्लोर, माइक्रो, लेनर्ड, है ना, इतने सारे हैं। बट अभी हम किस पे काम कर रहे हैं, वी आर वर्किंग ऑन आर्डुइनो। इन द लिंक इट्स शोइंग डोनेशन, नहीं तो डोनेशन नहीं देनी। दिस इज एन एनजीओ, मतलब एनजीओ तो नहीं बोलेंगे, बट दिस इज एन ओपन सोर्स, फ्री है। ऑल यू हैव टू डू इज सिंपली आप क्लिक करो नो थैंक यू, एंड वो अपने आप डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो नो इश्यूज देयर। सो आप बोर्ड सेलेक्ट करोगे, एंड व्हाट इज द बोर्ड दैट वी आर यूजिंग, वी आर यूजिंग Arduino IDE, दैट इज सॉरी Arduino Uno। So आप simply Arduino Uno को connect करोगे, and then you can start like uploading the code, but before that you also have to do one thing, कि आपको पोर्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब ये पोर्ट क्या होता है, पोर्ट बहुत सिंपल है। आपने देखा है डेस्कटॉप या सीपीयू या लैपटॉप, सो उसमें आपने देखा होगा साइड में बहुत सारे पोर्ट्स बने रहते हैं, कोई माउस कनेक्ट करने के लिए, कोई कुछ कनेक्ट करने के लिए, कोई ये कोई वो, ये वो करके 4-5 पोर्ट्स होते हैं। सो आपको तो आर्डुइनो को बताना पड़ेगा ना, कि लैपटॉप को बताना पड़ेगा कि ये जो आर्डुइनो हमने कनेक्ट किया है अभी अभी वायर से, ये किधर कनेक्टेड है, राइट। So that is why you have to select the port. So this is another task which will again be taught in the classes. So today's class is all about introduction, a little brief कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, and things like that. Okay. Okay. एंड दिस इज एक बार जब आपने सेलेक्ट कर लिया कि आपका बोर्ड कौन सा है, आपने सेलेक्ट कर लिया कि ओके, सो आई एम ट्राइंग टू रैप अप, कि मैं चाहता हूँ कि क्लास बोरिंग ना हो, ठीक है। सो आई डोंट वांट कि क्लास बोरिंग हो, डू यू वांट इट? नहीं, डोनेट नहीं करना। ओके, अच्छा ये बताओ, बोर कौन कौन हो रहा है और मजा किस किस को आ रहा है, किस किस को मजा आ रहा है, रेज योर हैंड्स। सीखने में मजा आ रहा है, आर यू एंजॉयिंग द क्लास? Okay, so it's kind of a mixed reaction, yes no, yes no। Okay, so आपको पता है कि हीरा कैसे बनता है? So एक कोयला होता है, एंड जब कोयले के ऊपर बहुत सारा हीट, प्रेशर, दबाव, मेहनत होता है, तब वो किसमें कन्वर्ट होता है, हीरे में। सो द सेम गोज विद यू, ठीक है। सो अभी क्या है कि आपको बोरिंग लग रहा होगा, आई नो लगता है बोरिंग, ठीक है, इट्स नॉट वेरी फन कि हम आर्ट कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, रोबोटिक्स है, इट्स मेंट टू बी अ बिट डिफिकल्ट, वरना हर कोई नहीं कर लेता। बट आई नो दैट यू ऑल आर ब्रिलियंट ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, है ना, यू ऑल आर टैलेंटेड, यू ऑल हैव द एबिलिटीज, दैट इज व्हाई यू ऑल आर प्रेजेंट हियर। ऐसे होता है, थोड़ा सा लगेगा मे बी कभी कभार, हो सकता है कि मे बी यू फाइंड इट बोरिंग, कि अरे सर हमें तो कुछ आता ही नहीं है, समझ में नहीं आ रहा, बट ट्रस्ट मी, टिके रहना है, हार नहीं माननी है, ठीक है। लगेगा बोरिंग, होगे परेशान, टिके रहना है, ठीक है। तो कुछ भी हो जाए सीखेंगे। आप सीखने के लिए यहाँ पे आप सोचो कि आपके पेरेंट्स ने इन्वेस्टमेंट किया भी किट खरीदने के लिए, रोबो क्वेस्ट कंट्रोलर खरीदने के लिए, एंड फिर आप इधर उधर ट्रैवल वैवल करोगे, तो जो भी एक्सवाइजेड सीन है, सो योर पेरेंट्स ट्रस्ट यू, उन्हें पता है कि माई बॉय और माई गर्ल इज अ रियली टैलेंटेड चाइल्ड एंड आई नो दे कैन डू इट, तो उनका भरोसा जीतो। कोई बात नहीं, कभी कभार वी हैव टू डू टास्क विच आर नॉट वेरी इंटरेस्टिंग, बट वी कैन डू इट, ठीक है। सो इट्स टू वन थिंग, जस्ट ये आप कोड अपलोड कर दोगे तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एंड दिस इज असेंबली एंड टेस्टिंग वाला पार्ट है। सो अब
सी एक बार जूम करके बता देता हूँ. How many pins can you see in the Bluetooth control module? नहीं, कॉन्फिडेंस लो नहीं करना है. ऑलवेज कीप योर हेड हाई, हेड एंड कॉन्फिडेंस हाई. ठीक है. Yes, 6 pins, and the pins are labeled as, first one is enable, second is VCC, that is 5 volts, third is ground, fourth is TX, fifth is RX, and sixth is state. तो आपके पास ऐसे करके 6 pins हैं. And now what you have to do is कि आपको simple, last time क्या था कि issue आ रहा था wiring में, इसमें उसमें. तो this year you don't have to go through all that trouble. We have sorted everything out. All you have to do is कि आपको simple ये 6 पिंस जो कनेक्टिंग केबल है उसकी 6 पिन जो होल्स है उसमें कनेक्ट कर देना. देखो, हाउ मेनी होल्स कैन यू सी इन दिस केबल? 6. तो टेल मी वन थिंग, जब ब्लूटूथ कंट्रोलर के अंदर 6 पिंस है एंड जो केबल है उसके अंदर 6 होल्स है, तो डोंट यू थिंक ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे? यस और नो? है ना? सो ऑब्वियसली जो केबल है उसमें 6 होल्स है, ब्लूटूथ मॉड्यूल में 6 पिंस है, तो बहुत इजीली ये सारे आपस में कनेक्ट हो जाएंगे. तो उसमें सोचना ही नहीं है, उसमें तो कोई इशू है ही नहीं हमारा. है ना? राइट. ओके, सो दीज आर द कंपोनेंट्स जो आपको नेसेसरी रहेंगे, रिक्वायर्ड रहेंगे. ठीक है, ये आपके किट के अंदर भी आए होंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज योर Arduino Uno, that is the small computer brain of your controller, that is brain of your robot. Next is BO motors, that is battery operated motors and can also called gear motors. Then we have a motor driver, that is L298, and then we have the Bluetooth module HC05. ठीक है, फिर डीसी जैक रहेगा कनेक्ट करने के लिए. सो दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट्स जो आपके किट के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट आएंगे. तो नथिंग न्यू हियर. एंड आप पीडीएफ को एक्सेस भी कर सकते हो बहुत इजीली. एक सेकेंड, लेट मी जस्ट. ओके, कंट्रोलर ओपन नहीं करना है एनी कॉस्ट पे. ओके, सो नाउ दिस इज द मोटर ड्राइवर जिसके बारे में आप पूछ रहे थे कि सर ये मोटर ड्राइवर, मोटर क्या, कैसे, है ना, व्हाट इज दिस ऑल अबाउट. सो बहुत सिंपल है, इट्स प्रीटी सिंपल. मोटर ड्राइवर क्या करता है कि मोटर ड्राइवर इज वही, ऑब्वियसली इट इज अ ड्राइवर, सो इट इज केपेबल ऑफ रनिंग कि दोनों मोटर्स को इट कैन मूव फॉरवर्ड साथ में, मूव बैकवर्ड साथ में. One is forward, the other is backward, the other is forward, and the latter one is backward. Okay, तो अलग अलग डायरेक्शंस में रोटेट कर सकता है एंड दैट इज हाउ इट मेंटेन्स, इट डज एवरीथिंग. ओके, सो इसको कनेक्ट करने का तरीका भी बहुत सिंपल है. सो आई नीड नॉट गो इनटू द वेरी डिटेल्स क्योंकि आप फिर अगेन देन बोर हो गए, है ना. बट द थिंग इज कि ये ऑलरेडी कनेक्टेड है इनसाइड द रोबोक्वेस्ट कंट्रोलर. आपको इतना मेहनत करने का जरूरत नहीं है. This motor driver is already connected to your Arduino Uno inside the Roboquest controller. Okay, so you need not worry about that. Now another important thing is this is the circuit diagram. Now circuit diagram कैसे important है कि circuit diagram में देखो, आपको काफी सारी चीजें तो नहीं देखनी. फॉर एग्जाम्पल Arduino मोटर ड्राइवर से कैसे कनेक्ट हो रहा है, इट्स नॉट योर इशू, ऑलरेडी कनेक्टेड है.
Arduino में कोड कैसे डलेगा, नॉट योर इशू, ऑलरेडी पड़ा हुआ है. Until unless you want to change the code or something, it's up to you. बट जो स्टैंडर्ड कोड है इट्स ऑलरेडी अपलोडेड. ठीक है. ब्लूटूथ क्या जोड़ना है, नहीं, ऑलरेडी जुड़ा हुआ आता है. 6 होल्स है, 6 पिन है, वो भी ऑलरेडी कनेक्टेड आती है. तो आपको बस लास्ट में कभी निकालो तो आप कनेक्ट कर सकते हो बहुत इजीली. दे आर ऑलरेडी प्री कनेक्टेड टू योर आर्डुइनो उनो. अब बची मोटर. सो मोटर तो सिंपल है. मोटर में क्या होता है कि जो आउटपुट है, आउटपुट 1, आउटपुट 2, आउटपुट 3, आउटपुट 4, और फिर मोटर ड्राइवर, ये आउटपुट 1 और आउटपुट 2 तो मोटर 1 से कनेक्ट होंगे, प्लस माइनस. एंड जो आउटपुट 2 है वो किससे कनेक्ट होगा, आउटपुट 2 विल बी कनेक्टेड, आउटपुट 3 एंड आउटपुट 4 विल बी कनेक्टेड टू योर मोटर नंबर 2. सिंपल. अब आई डोंट थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट, है ना. या सो ये चीज तो काफी सिंपल है एंड आई एम श्योर सबको क्लियर हो गई होगी. Now let me just copy this link. Okay, so लास्ट में आपको नंबर भी दे रखा है. लेट मी जस्ट कॉपी दिस and paste it right here. ओके. सो आप यहाँ से कांटेक्ट भी कर सकते हो ईबीएल एजुकेशन को, अगर आपको कोई ऐसा इशू आ रहा है कि सर ये है वो है, तो आई हैव शेयर्ड ऑल द डिटेल्स विद यू. सो अभी आई डोंट वांट कि फर्स्ट डे है, आप लोग 1 घंटे से बैठे हो एंड बोरिंग नहीं बनना चाहिए, है ना. इंपॉर्टेंट है कि बोरिंग ना हो सेशन. सो बिकॉज दिस आई हैव शेयर्ड द लिंक, तो जिससे सेशन बोरिंग ना हो, I am going to end the session right here. Okay, thank you and best of luck. And before you get go, let me just give me a small feedback on how the session was. So on a scale of 1 to 10, how did you like this session? Was it worthwhile? थोड़ा सा कुछ समझ में आया, चीजें क्लियर हुई, बादल हटा, क्लैरिटी आई थोड़ी सी. ओके. ठीक है. Thank you. Thank you. You all are so sweet. I love you all. Thank you. It has been an amazing session with you. Okay, I really loved it. So it was okay. And obviously, I am also a learner. So I try to learn new things every time. And the positive comments as well as the negative comments are just a small fuel for me. So keep supporting me. Okay, for those who liked this session, and for those who think that this session wasn't worth the while, please let me know in the comment box, and I will sincerely try to improve wherever I lack. Okay. तो कभी कोई इंसान छोटा नहीं हो जाता अपनी गलती मानने से. We all are humans and we should keep learning new things each and every day, and that is how we grow, right?
ठीक है. So okay, so I will make sure that I share the PDF with you in the RoboQuest group. Okay, so don't worry about that. ये PDF आपके पास रहेगी, and feel free to use your uh, if you have any doubts, feel free to contact me. And I hope I cleared all of your doubts, right? So thank you everyone so much. Thank you. uh, it was amazing talking to all of you, and see you on the last day. तो आप अपने अंदर चेंज देखना. टुडे इज द फर्स्ट डे दैट आई एम सीइंग यू, एंड यू ऑल आर हियर अ बिट हैसल, एंड एक हफ्ता रुक जाओ. गिव इट योर ऑनेस्ट 100%, एंड देन आई विल मीट यू ऑन द लास्ट डे. तब बात करते हैं कि आपको कैसा लगा चीज़ें सीखने में. ठीक है, चलो. इट वॉज अमेजिंग. बाय 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 एवरीवन. बाय. लव यू. लव ऑल ऑफ यू. Thank you. It has been a great session. Thank you, Arushi. Chalo. Bye, everyone.